Hello students, today will be discuss about the drama of ideas. आज का हमारा टॉपिक है द ड्रामा ऑफ आइडियाज. ड्रामा ऑफ आइडियाज वर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉब्लम प्लेज. In the drama of ideas there is a plot and characters, but characters are not lively, they are only abstract sketches. The dialogues in this drama are witty, but there is no action in them. The characters in this drama of ideas are puppets in the hands of the playwrights. They are his mouthpiece and say that what the dramatist wants them to say. The drama of ideas was not in fashion till the decade of the 18th century. Then it was introduced to concentrate on the social, domestic or personal problems. It was deeply influenced by Ibsen. The period in which the drama of idea was introduced was full of complications. New ideas were conceived of. The thought of man very sweet was felt by the playwrights of the period that the confused man must be guided to the right path, and drama of ideas was chosen for this purpose. Here it must be borne in mind that at that time there developed two parallel traditions in drama in the leadership of Galsworthy and George Bernard Shaw. Galsworthy became the wonder of problem play and G.V. Shaw Galsworthy became the founder of the drama of ideas, but there cannot be drawn a clear line of demarcations between these types of plays, but they are so closely associated with each other that they frequently enter the field of each other. ड्रामा ऑफ आइडियाज़ प्रॉब्लम नाटक से भिन्न था. ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में प्लॉट और चरित्र तो होते हैं परंतु चरित्र सजीव नहीं होते, वे अस्पष्ट रेखा चित्रों की भांति होते हैं. ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में डायलॉग्स वाक्य चातुरीपूर्ण होते हैं परंतु इनमें एक्शन नहीं होता. ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में चरित्र लेखक के हाथ की कठपुतली मात्र होते हैं, वे कहते हैं जो नाटककार उनसे कहलवाता है. ड्रामा ऑफ आइडियाज़ 18वीं शताब्दी के 90 के दशक तक प्रचलन में नहीं थी. इसकी सामाजिक, घरेलू, व्यक्तिगत समस्याओं पर विचार करने के लिए प्रचलन में लाया गया. ये नाटक इब्सन से बहुत अधिक प्रभावित था. जिस युग में ड्रामा ऑफ आइडियाज़ को प्रचलन में लाया गया वह जटिलताओं से भरा हुआ था. नए विचार सोचे जा रहे थे, मनुष्य के विचारों में बड़ी विभिन्नता थी, इसलिए उस समय के नाटककारों ने अनुभव किया कि भ्रमित व्यक्तियों को सही मार्ग की ओर निर्देशित किया जाए. इस कार्य के लिए ड्रामा ऑफ आइडियाज़ को चुना गया. इस बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उस समय दो समांतर नाटकीय परंपराएं विकसित हुई. एक का संस्थापक गॉल्सवर्दी था, दूसरे का लीडर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ था. गॉल्सवर्दी प्रॉब्लम प्ले का संस्थापक बना था, शॉ ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का संस्थापक बना. परंतु इन दोनों प्रकार के नाटकों के मध्य कोई स्पष्ट विभाजीय रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हैं. वे बहुत एक दूसरे के क्षेत्र में भी प्रवेश करते हैं. The problem play deal with the evils of society, and the drama of ideas presents the views how new things can be involved to replace the routine traditions of society. But when people became aware of the social problems of the day, they become a fertile ground for the growth of drama of ideas. Ibsen, Shaw, Galsworthy and Grenville were the pioneer in this field. The new psychological inventions increased playwrights' interest in character and realistic and ideological drama aimed at the impartial portrayal of realistic life. The main weakness of this new realistic drama of ideas was that it lacked everything that could create the imaginative aspect among the audience, and there was a danger that it might be restricted to the depiction of social picture as it happened to Galsworthy. Though these dramatists struggled hard for recognition, it was evident that the future of drama of idea was not bleak. This drama does not differ from the earlier drama only in its subject matter, but even in the treatment of actual life. It became more and more a drama of ideas, and so sometimes it appeared to be didactic.
प्रॉब्लम प्ले का मुख्य विषय समाज में निहित बुराइयां थीं, जबकि ड्रामा ऑफ आइडियाज में ये बात प्रमुख थी कि समाज में व्याप्त बुराइयां, दूषित परंपराओं को बदलने के लिए किस प्रकार नई बातों को विकसित किया जा सकता है। परंतु जब लोग अपने समय की समस्याओं से अवगत हो गए तो ये समस्याएं ड्रामा ऑफ आइडियाज के लिए अब उपजाऊ भूमि बन गई। इस क्षेत्र में इब्सन, गोल्ड्सवर्थ और शॉ एंड ग्रैनवाइल अग्रणी थे। नए मनोवैज्ञानिक आविष्कारों ने नाटककारों की रुचि चरित्र में बढ़ा दी। इस प्रकार आइडियोलॉजिकल नाटक का उद्देश्य वास्तविक जीवन का बिना भेदभावपूर्ण चरित्र बन गया। इस नए वास्तविक विचारों वाले नाटक की मुख्य कमजोरी ये थी कि उसमें उस प्रतीकवाद की कमी थी जो श्रोताओं के कल्पनात्मक पक्ष उत्पन्न कर सके, और उसे इस बात का खतरा था कि वे केवल सामाजिक चित्र के चित्रित करने तक सीमित न रह जाएं, जैसा कि गोल्ड्सवर्थ के साथ हुआ। इन नाटककारों को मान्यता के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा, परंतु ये स्पष्ट थी कि ड्रामा ऑफ आइडियाज का भविष्य अंधकार में नहीं था। The young man was keenly desired to get rid of bondage of every kind, and women were making efforts for liberty in every field. So both the young and the women were restless and dissatisfied with their predicament. New meanings were attached to life with new scientific inventions. And George Bernard Shaw invented quite a new theory of life force. Age-old social conventions were completely despised, and intellectuals like Shaw and Galsworthy pondered seriously about improving the condition of common men. Since ideas were most important in drama of ideas, its plots were neglected, and the dramatists concentrated more and more on the presentation of various ideas. Shaw was one of the pioneers of the modern drama of ideas. He produced a type of discussion play in which the clash of ideas and contradictory ideologies posed the most acute problems related to social and personal immorality. He was an active member of the Socialist Fabian Society. Widow's House was his first play. In it, he laid emphasis on social and economic issues instead of romance. In Mrs. Farron's Profession, Shaw deals with the issue of prostitution, arms and the man Candida, and Caesar and Cleopatra are comedies. Man and Superman is a comedy and philosophy by Shaw's definition. In it, he transforms the traditional theme of Don Juan. Here, the hero is pursued by a woman. In John Wells' Other Islands, Shaw presents two principal characters who presents a contrast not only to national types, the Irishman and Englishman, but also to the romantic and the realist. Shaw interpreted them. Major Barbara is a criticism of Borges' philosophy. In this film, Bernard Shaw first expressed the idea that violence must be opposed by the force that serves social progress and justice, even suggesting the solution of personal problems. Bernard remained distinctly a social dramatist. In The Doctor's Dilemma, Bernard shows how medical and medicine lost its human character under conditions. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ड्रामा ऑफ आइडियाज के अग्रणी दूतों में से एक था। उसने एक प्रकार के विचार विमर्श वाले नाटक लिखे जिनमें विचारों का टकराव विरोधाभासपूर्ण सिद्धांत मुख्य समस्या प्रस्तुत करते थे जो सामाजिक तथा व्यक्तिगत नैतिकता से संबंधित होती थी। वह सोशलिस्ट फेबियन सोसाइटी का कार्यशील कार्यकर्ता था। विडोज हाउस इसका प्रथम नाटक था। इसमें उसने रोमांस की अपेक्षा सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर जोर दिया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की परिभाषा के अनुसार उसका नाटक मैन एंड सुपरमैन एक कॉमेडी एंड फिलॉसफी है। इसमें उसने परंपरागत डॉन जॉन के विषय का रूपांतरण किया है। इसमें एक महिला नायक का पीछा करती है। इन जॉन वेल्स अदर आइसलैंड ऑफ शॉ दो मुख्य चरित्रों का प्रस्तुत करता है जो केवल राष्ट्रीय विरोधाभास इंग्लिश बनाम आयरिश, जैसा कि बर्नार्ड ने व्याख्या की है कि रोमांटिक एवं तार्किक या विवेकी विरोधाभास भी प्रस्तुत करते हैं। अपने नाटक में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का मुख्य उद्देश्य अपने विचारों को व्यक्त करना, लोगों को इस बात के लिए सहमत करना है कि वे उसके विचारों को गंभीरता से ना लें। उसके अधिकतर विचार परंपरागत जीवन के विरुद्ध हैं। वह कलामात्र कला के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। वह एक समाज सुधारक तथा नाटकों के माध्यम से समाज में सुधार लाना चाहता था।
A drama of idea is different from problem plays. A drama of idea has plot and characters, but the characters of drama of ideas are not lively. They are thumbnail sketches. They have witty dialogue, but there is no action in them. The characters in the drama of ideas are puppets in the hands of the playwright. They say what the dramatist wants them to say. A drama of idea is a type of discussion drama which is hard to be staged. In it, the dramatist shows that clash of ideas, contradictory ideology pose most serious problems of social and personal morality. The ideas expressed in the drama of ideas were for the most part revolutionary, and so the drama became a battlefield of various ideas, sometimes contradictory and against age-old social traditions. Bernard Shaw was a moralist, and he was one of the earliest to advocate the new social drama of fiction. In his plays, George Bernard Shaw deals with the various social problems. His plays are designed to serve as a vehicles for ideas. He explores every known problem, social, moral, political, religious, in his play. The ideas and Bernard Shaw witty aberrations relegate the plot and characters into a secondary position in our minds, but quite often the situations are full of drama and suspense. The dialogue is witty and realistic, and some of the characters are highly interesting. G.S. Fletcher says his plays are not only series of lively and entrancing performance, but a kind of running commentary on the burning topics and leading ideas of the age. Shaw made a great contribution to the drama of ideas, and his plays such as Mrs. Warren's Profession,